ट्रिगरिंग का मतलब है कि आपके जो व्हेन यू आर अप्लाइंग इनपुट टू ए फ्लिप फ्लॉप, ओके, तो आपके इनपुट विल बिकम एक्टिव और ट्रिगर्ड ओनली विथ क्लॉक सिग्नल, ओके. And we were discussing two type of triggering. First was our positive edge triggering, positive edge triggering, okay, and second was negative edge triggering. Positive edge triggering में we told that when your pulse is rising, okay, then only with rising pulse transition take place or input become active, okay. And negative edge triggering when your pulse is falling, okay, then the transition take place, okay. So how to produce these triggering? So if I want to produce positive edge triggering, okay, so for that we have logic circuit, we have a clock, okay. This clock is connected with an inverter, and then we have a diode, and this signal also going to this in this AND gate, okay, and we are getting output here. So when we apply clock signal, जी बोलिए. अभी जो आपने ड्रॉ किया है क्लॉक, वो नेगेटिव clock है, positive edge, okay, this is a positive edge clock, okay, positive edge triggering. So we have a clock, we are applying a signal, okay, and this signal will become inverted, okay. Now what is the property of this inverter? This will invert this signal. जो भी इन्वर्ट होता है ना, गेट में हमेशा क्या होता है कि आपका कुछ डिले होता है, इन्वर्टिंग में कुछ डिले होता है. तो आप जैसे ये सिग्नल लगा रहे हो, दिस सिग्नल बिकम इन्वर्टेड, बट दिस सिग्नल विल बिकम इन्वर्टेड ओनली विद डिले, ओके. तो आपको जो आउटपुट आएगा इस सिग्नल से यहाँ पर, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, okay, this like something like this. So this will be inverted. So this is suppose ये वाला पार्ट पूरा एक बार समझा. This is my clock, okay, and this is my inverted clock. भी ये क्लॉक है. अब इसमें मैं को सिग्नल दे रहा हूँ, तो सिग्नल इन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ओके. पर इन्वर्ट होगा, पर इन्वर्ट जो आउटपुट आएगा थोड़ा डिले आएगा, तो ये डिले हो गया, ठीक है. अब एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? एंड गेट का आउटपुट 1 कब आता है? जब दोनों पल्स 1 हो, ओके. अगर दोनों पल्स में एक भी 0 है तो आप, या दोनों 0 है तो अब आपका आउटपुट 0 आएगा. अगर मैं अब इस पल्स का मैं आउटपुट लूंगा, ओके, इफ आई टेक द आउटपुट ऑफ दिस पल्स, नीचे जा रहा है, एक मिनट, okay. So if I take the output of this pulse, okay, what will become now? Only when these two pulses are positive, okay, तभी आपको आउटपुट मिलेगा. ये 1 है, ये 1 है, यानी इसका मतलब क्या है? आपको एक स्पाइक मिलेगा. मैंने क्या बोला कि जब भी आपकी क्लॉक सिग्नल अलाउ करेगी, then only your input will become active, okay. Now in this type of positive triggering, okay, your output of this clock, okay, will be a spike. तो मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको रब कर दूं मैं, इसको रब कर दूं. सर ये जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो डिले की वजह से मुझे मिलेगा, क्योंकि डिले हाँ, डिले हो रहा है, तभी आपको ना खाली स्पाइक मिलेगा, आपको पूरा ऐसा सिग्नल नहीं मिलेगा. आपको थोड़े समय के लिए आपकी जो पल्स होगी वो 1 होगी मतलब हाई, लॉजिकली हाई होगा, थोड़े समय के लिए आपका ट्रांजिशन होगा, ओके. नाउ दिस इज द प्लॉट, दिस इज सिग्नल क्लॉक, ओके, एंड दिस इज माय आउटपुट. सर हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी भी ड्रॉ करने दो मुझे पहले, ओके. Now I want output, okay. So this is my clock, okay, and this is this one. Now इस region में this is high, this high, so only you will get output of AND gate in the form of spikes,
ओके, तो ये आउटपुट है, आउटपुट ऑफ एंड गेट है। अब आउटपुट ऑफ एंड गेट 1 कब होता है? जब आपका सिग्नल्स 1 1 हो, तो ये भी 1 हो, ये 1 हो, तो ओनली इन दिस रीजन यू हैव सिग्नल 1, तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव पल्स मिलेगी। एंड जब भी ये पॉजिटिव हो जाएगी, ओके, देन ओनली दैट मींस दिस इज गेटिंग पॉजिटिव, और when it is rising, ओके, सो राइजिंग के टाइम पे ये पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं राइजिंग ट्रिगरिंग और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो आपको ये सिग्नल मिलेगा, इस सिग्नल से आपके जो इनपुट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? हेलो, क्या बोल रहे थे अभी? सर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था सर, हाँ कैन यू हाँ जस्ट रिपीट व्हाट यू हाँ, हैव सो वी आर टोल्ड? डिस्कसिंग टू टाइप ऑफ ट्रिगरिंग, ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ओके, सो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि आपको when you are applying clock, okay, अभी मैंने डायग्राम बनाया था, लॉजिक सर्किट बनाया था पॉजिटिव ट्रिगरिंग का, ओके, so you get the AND gate will give you output only for some time, okay, when it is rising. So this will be pulses, okay, so this is called your generation of narrow, okay, generation of narrow spike, generation of narrow spike at positive, spike at positive, okay, positive going transition, positive going transition, okay, of the clock pulse, of the clock pulse. Last class you are discussing me what is the difference between a positive clock and positive as triggering and negative triggering, okay, so the clock का जो logic circuit है that is different, okay, so this is your positive edge triggering. Now we'll discuss what is negative edge triggering. हाँ बोलिए सर। हमने ना जो क्लॉक डैश का जो मतलब नॉट क्लॉक का जो आपने डिले दिखाया ना, हाँ वो पहले एज को डिले होगा, दूसरे केस में भी डिले ही आएगा ना? हाँ, तभी तो सिग्नल बाबा, तभी तो स्पाइक्स ही प्रोड्यूस होंगी भाई। जब आपको आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब वो पल्स राइजिंग है, पल्स राइजिंग है, फिर आपका ये आ जाएगा, फिर सेकंड पल्स आएगी, उसमें भी राइजिंग के टाइम पे आपको सिग्नल मिलेगा, स्पाइक मिलेगा, ओके, सो you'll get अब जब भी ये पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव होगी दोबारा, फिर आपको एक सिग्नल मिलेगा, फिर एक आपको स्पाइक मिलेगा, फिर आपको स्पाइक मिलेगा। तो जब जब ये स्पाइक मिलेगा एंड दिस स्पाइक विल गो टू द इनपुट ऑफ आवर फ्लिप फ्लॉप, जब भी ये 1 होगा तभी आपके सिग्नल एक्टिव होंगे, ओके, अभी डिस्कस करेंगे, मैंने डायग्राम सर, बनाया। डिले डिले क्यों होता है सर? सर ये तो सर प्रॉपर्टी है, गेट की प्रॉपर्टी है, ओके, गेट्स होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स के बने होते हैं ना, तो उनमें डिले तो होता ही है, किसी भी इनपुट को देंगे तो आउटपुट में डिले आता ही है, ओके, तो दिस वाज योर पॉजिटिव। हाँ हाँ सर, जो फ्लॉप का डायग्राम हमने जो किया था, हाँ, उसमें नेगेटिव ट्रिगरिंग के लिए ही क्लॉक जो नोट होता है ना? दोनों नहीं, दो तक क्लॉक होती है, एक पॉजिटिव ट्रिगरिंग क्लॉक होती है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक होती है, ओके, क्लॉक दोनों तरह से होती है। तो अभी मैंने जो डायग्राम दिया था वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का था, क्लियर? क्लॉक कैन बी एनीथिंग ना, क्लॉक तो जैसे मैंने ये बनाया, ये पॉजिटिव एज क्लॉक, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, तो ट्रांजिशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन, बिकॉज़ स्पाइक क्या आ रहा है, व्हेन दिस पल्स गोइंग अप। Similarly, clock can be negative as triggering. When clock going down, then transition will take place. Okay. So there are two types of triggering. Okay. Now this was the positive as triggering. Now let me discuss what is negative as triggering. Yes. सर Only in this small time the input will Yes. go na? Yes. Only clock का मतलब ये होता है कि clock will control your inputs. Okay. When clocks allows your input, like जैसे हमने कहा enable में, when enable is one, your inputs become active. Similarly here, when your clocks allows, okay, when clock is high, then your inputs are active, and clock is 0, your inputs are deactive, input काम ही नहीं करेंगे, okay, when clock become active, then only this input will come and you will get output, okay, so this was your सर, ये positive। तो वो कंप्लीट वेव के लिए हो गया क्या? मतलब कि डिले बाद में हाँ रिकवर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? ये क्लॉक का, मतलब हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? नॉट क्लॉक जो हमारा है ना, उसके लिए जो डिले होगा, स्टार्टिंग में जो डिले आ जाएगा, हाँ वो कंप्लीट वेव में ऐसा डिले आएगा या फिर सिर्फ स्टार्टिंग में डिले आएगा, ऐसा कुछ है? जब मतलब जब सिग्नल लगाओगे तब तक डिले आएगा, ओके, जैसे मैंने एक वेव बनाई तो वो डिले के साथ में आई, फिर जब दूसरा वेव लगाऊंगा वो भी डिले के साथ आएगी,
इससे लॉन्ग फिर डिले के साथ आएगी। सर अगर ये डिले नहीं होता हाँ तो कुछ होता ही नहीं मतलब। हाँ तो फिर आप स्पाइक्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते ना, ये तो स्पाइक्स प्रोड्यूस करने का सर्किट है। ओके भी जो ट्रिगरिंग होती है वो इनेबल जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं फ्लिप फ्लॉप में, तभी क्लॉक के साथ काम करता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उसको इनेबल डिसेबल करते हैं इनपुट्स। ओके नाउ दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। So negative is triggering में क्या है, circuit is same, you have a clock, okay, you have an inverter. Now instead of AND gate you have bubbled AND gate, this going here and you're getting output. Okay, in this case opposite happens when you're applying clock signal. Okay, you get same delay. Okay, you got delay. Okay, you got delay. Now you see now output कैसा आएगा बताइए, आउटपुट 1 कब आएगा, इसमें आउटपुट 1 कब आएगा, नेगेटिव मतलब सेकंड इसमें आएगा जब दोनों 0 0 हो। ओके दोनों 0 0 कब है, ये 0 है ये 0 है। ओके यहाँ पर ओके सो यू गेट आउटपुट हियर ओनली दिस टाइम। सो व्हेन क्लॉक इज फॉलिंग देन ओनली यू गेट स्पाइक। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो एक 1 एक 0 एक 1 एक 0 है। ओके तो इसमें तो होगा नहीं, तो जहां पे दोनों 0 0 होंगे, जिस पॉइंट पे दोनों 0 0 होंगे उस पॉइंट पे आपका स्पाइक आएगा। ओके तो दिस इज द जनरेशन ऑफ नेगेटिव स्पाइक। ओके जनरेशन ऑफ नेगेटिव स्पाइक, जनरेशन ऑफ ए नैरो स्पाइक, जनरेशन ऑफ नैरो स्पाइक ओके एट नेगेटिव गोइंग क्लॉक पल्स। ओके सो ये था डिफरेंस नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। नाउ विल डू सम प्रॉब्लम्स। ये क्लियर है ना सर? हाँ सर हाँ, 1 and other is 0 हाँ। तब भी तो आउटपुट 1 आती है। और आउटपुट एंड गेट में आउटपुट 1 कब आता है, और एंड गेट में एंड गेट में जब दोनों 1 1 हो, और ये इसमें क्या होगा जब दोनों 0 0 होंगे, हैं ये 0 NAND गेट 0 0 होगा। ओके तो उसका इन्वर्टर के 1 आएगा, उसका इन्वर्टर के 1 आएगा, तभी तो 1 आएगा, तो दोनों 0 0 होना चाहिए ना इसमें। अगर 1 1 होगा, अगर 1 1 होगा 1 1 होगा तो ये 0 0 थोड़ी फिट आएगा। ओके सो दिस इज योर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। Now let us see this problem. So this is a positive edge triggering. Okay. Now what will be the output? They have given clock, they have given inputs, and now asking what is the output Q. So I told you अगर क्लॉक 0 है तो आपके सिग्नल डिसेबल्ड रहेंगे. Okay. So your output. Okay. So I am assuming the output is 1 in the beginning. You can assume output 0 also, because the state of Q can be anything. It can be 1 or 2, it can be 0. Okay. So I'm assuming in the beginning output is 1. Clock is 0. So output will be, so these are disabled. So when these are disabled, okay, you will get you will get no change condition. We have discussed the SR flip flop to table. So when that time you've seen, if my clock is 0, okay, my inputs become deactivated. No change, sir, no change. No change condition. So if this is 0, I will get no change condition. Now only when this clock is moving up, और ट्रांजिशन टेक प्लेस, तो हमको खाली इसको देखना है. अब इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में ये लो है, ये भी लो है, सॉरी हाँ, इसके बाद में ये क्या है, ये सिग्नल क्या है, एस क्या है, इस क्लॉक के समय पे 0 है, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी 0 है. तो 0 0 मतलब क्या, 0 0 मतलब क्या, नो चेंज कंडीशन. 0 1 है ना सर, है 0 1 का है, ये गैप तो है ना यहाँ पे, ये इसको ऐसा कर दो, गैप है ना. इस पॉजिटिव एज पे क्या है, जैसे जब एज हो रहा है, एज के जस्ट बाद में क्या हो रहा है, ये 0 है, ये भी 0 है,
तो 0 0 होता है न्यू नो चेंज कंडीशन, तो जो आपका आउटपुट हो वैसा का वैसा आएगा कहां तक, नेक्स्ट ट्रांजिशन तक, ये नेक्स्ट ट्रांजिशन तक बी। अब नेक्स्ट पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजिशन पे ये 0 है, S 0 है और R क्या है, 1 है, तो 0 1 पे क्या होता है, रीसेट 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 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे हो जाएगा ये, ओके कहां तक, नेक्स्ट ट्रांजिशन तक, तो आपको ट्रांजिशन देखना है यहां तक, ओके। नाउ इट्स सी पे क्या है, ये 1 है, ये 0 है, 1 0 1 0 पे क्या होता है, सेट कंडीशन। तो आउटपुट अगेन बिकम हाई, ओके आउटपुट सर रीसेट पे नीचे क्यों आ रहा है और सेट पे ऊपर क्यों जा रहा है सर? रीसेट में तो Q 0 होता है ना, ओह ओके सर, ओके सर। okay now this become 1, okay this one become 1, now next transition यहाँ पे 1 है, okay just और यहाँ पे क्या है 0 है, okay just इसको थोड़ा इसको ऐसा ड्रॉ कर लो, so when this is your 1 this is 0, okay तो क्या हो जाएगा 0 1 0 पे क्या हो जाएगा अगेन हाई, 1 0 पे क्या हाई होगा ना, okay let me check, okay so this is my this is my clock, okay I'm getting this one, so this will C पे ये हाई जाएगा up to C से D up to E, okay यहाँ तक हाई जाएगा, और E पे क्या होगा फिर 0 1, E पे क्या हो जाएगा this is 0 it is 1, तो अगेन डाउन हो जाएगा और ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन F पे क्या हो जाएगा, F पे अगेन 1 0 है तो F पे अगेन अप हो जाएगा, ओके तो E और F के बीच में डाउन है, E और F के बीच में डाउन, ठीक है, C और E के बीच में हाई है, ठीक, ओके हाँ बोलिए। सो क्लियर है ये कैसे लगाना है, यस सर। हाँ तो आपको खाली बस ये याद रखना है कि ट्रांजिशन कब टेक प्लेस कर रहा है, इसी की जगह पे अगर नेगेटिव ट्रिगरिंग होता तो आप ट्रांजिशन खाली नेगेटिव ट्रिगरिंग पे देखते हैं, पॉजिटिव ट्रिगरिंग पे नहीं देखते हैं, ओके तो दिस इज द डिफरेंस। नेगेटिव ट्रिगरिंग का भी क्वेश्चन करेंगे अभी, so this was your SR question for SR वेट सर डोंट We are writing. हाँ Please wait. you can draw randomly anything, okay कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने ड्रा किया वैसे करो, you should have आपस understanding okay what is happening। Okay, now we will discuss JK flip flop। Now in the when we seen SR flip flop, when you have a input 1 1 तब SR flip flop में क्या मिलता है, सर इनवैलिड इनवैलिड मिलता है, ओके नाउ इन द नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप इज सेम टू टेबल, सेम जैसे पहला है एसआर का वैसा ही जेके का भी है। जेके में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि नाउ फॉर 1 1 यू विल गेट टॉगल कंडीशन, ओके सो वी विल सी व्हाट इज द सर्किट नाउ, कैन आई रेज दिस वन, टैप कर दो इसको, यस सर। okay so let us see what is the circuit for your JK flip flop, okay so in the case of JK flip flop, okay this is my J, this is my K, okay this is Q bar, okay and here we have a clock C, okay so this is a logic symbol for JK flip flop। now let me draw the truth table, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, दोनों रेज कर दो ना, now you have circuit, okay we have this gates, okay these also are NAND gates, okay so we know this is Q, this is Q bar, okay
and we know इसका जो output है that will go here, that will go here. Okay, similarly इसका जो input है that will come here. Okay, now और इसमें एक चीज क्या होगी कि you have a clock. Okay, so you have a clock also. Now what will happen, जो input यहाँ पे दे रहे हैं एक input same वो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा. Okay, so what I'm giving here that will go here also. Okay, similarly here will be one J, here will be one K. Okay, and what I'm giving here ये input यहाँ पे भी जाएगा. Okay, similarly what I'm giving here, okay, that input will go here. Okay, so what will I can draw, this is my J, this is my K. Okay, so this is going here, this is going here. Okay, so this is coming here and this is going there, both sides. And now I want one more clock also, so this will be clock. So this is the signal 4, and now input of this one will be this one and input of this one will be this one. Now your two inputs. Okay, तो पहले कोई फर्क नहीं, पहले जो हम यहाँ पे दे रहे थे Q को input देते थे, अब Q is going here also and this Q going here also, this Q going here also. Okay, so this will modify our truth table. So this is the circuit for JK flip flop. Okay, this is a latch and this is steering gates. This is JK flip flop. Okay. So उसको draw कर दो, फिर हम उसकी टेबल डिस्कस करते हैं. Now टेबल में क्या करना है, 1-1 के लिए देखते हैं ना, 1-1 के लिए देखते हैं, बाकी तो सब आप चेक कर लेना. We'll see 1-1. Okay, so when we are giving J equal to 1 and we are giving K equal to 1. Okay, and suppose this is in the beginning, this is 0 and this is the beginning 1. Okay, so now this 0 is going here, so whenever 0 goes here, this becomes 0, this becomes 1. Okay, and this 0 is coming here, input. तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0, ये हो जाएगा 1. Okay, now this 1 is going here, so this 1 is going here. Okay, this 1 is going here, this 1 is also going here, and yeah, 1 1, so you're getting 1 1, you're getting 0 here, so you're getting 0 1 0 1 0, you're getting 1 here. विदाउट क्लॉक देख रहे हैं सर? हाँ, तो विदाउट क्लॉक देख रहे हैं क्या अभी? विदाउट क्लॉक देख रहे हैं, क्लॉक के साथ देख रहे हैं? क्लॉक 1 है, बिना क्लॉक का काम करता ही नहीं ना, बिना क्लॉक ऑलवेज 1, क्लॉक के बिना काम करेगा ही नहीं ना. तो क्लॉक 1 है, J 1 है, क्लॉक इज 1, J is 1. Okay, K is 1, clock is 1. Now and third input is coming from here. Okay, if it is, this is coming here 1, this is coming now this become 1. Okay, अभी क्या हुआ, अभी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, I started from 0 here ना, बुला दे तुमने 0 से स्टार्ट किया, 0 0. Okay, this becomes 0 and this becomes 1. Okay, it is 1 come here, 1 0 0, this becomes 1. Okay, तो started with 0, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, and now this 1 go here, this is 1 1 1 and this becomes 0. तो क्या हो गया, टॉगल हो गया. We started with 0 and this become 1. We start टॉगल मतलब उल्टा हो गया, क्यों, पहले यहाँ पे 0 1 था, ये 1 0 हो गया. 1 0. Okay, now we will start again. We start with 1 0. My inputs are 1 1. I'm starting with 1 0. Okay, so when I start 1 0, this 1 go here. Okay, and this 1 go here, this 1 also go here, so this becomes 0. Okay, because 1 1, okay, clock is 1, this becomes 0, so 1 0 0, this become 1. Okay, this 1 go here. Okay, this 1 go also here, so 1 1, this is 0 0, so what will become, this 1. Okay, so 1 and this 1 1 1 1 1, this becomes 0, this becomes 0, this becomes 1. वापस 1 ही आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है वापस 1 ही आ गया. क्या आएगा 1, वापस चेक करो एक बार 1 कैसे आएगा. Okay, I am starting here 1. Okay, so 1 is coming here, 1 is going here, so this is 1 1, 0 is coming here, so 0 1 0 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 0 का opposite 1. Okay, so 1 going again here, so I'm getting 1 here, this 1 going here, so 1 1 1 0,
0. Okay, so this is 1 0 0 1 1 ही आ रहा है ना. Now 1 again go here, 1 again go here, 1. Okay, so sorry, 1 go here and this 1 go here, 0 0 1. ये स्टेबल हो गया क्या? टॉगल होना चाहिए. हाँ सर. चेक करो, टॉगल होना चाहिए. ये 0 सर 0 स्टेबल हो गया सर. हाँ, स्टेबल कहाँ से हो जाएगा? स्टेबल हो गया सर. 0 0 1 के लिए हमको when you put 0 start it should be 1 0 और 1 0 के लिए स्टार्ट करने तो ये पहले 0 था ना हमारा, इसको हमने 1 क्यों किया था? इन द स्टार्टिंग इट इज 0. ओके, स्टार्टिंग इट इज 0 ना, हम इसको 1 क्यों कर रहे हैं? 1 लिया था इसलिए नहीं आता. हाँ हाँ, इसलिए उल्टा गया ना. ये आता. अब चेक करो. तो दिस इज 1. ओके, so this is 1 and this is 1 1 0. Okay, so now 1 0 1 0 0, this become 1, this उल्टा हो गया 1. Okay, now this one go here, this one go here 0. ये उल्टा कैसे हो रहा है? This is just check it again. कुछ मिस्टेक हो रहा है, करने में मिस्टेक हो रहा है, इसको सेटल करने में मिस्टेक हो रहा है. सर हाँ, ये हमारा सब सही है. Q-1 आया, Q-1 यहाँ गया, वहाँ भी 1 हाँ. चला गया ना. हाँ हाँ, तो ये 1 चला गया इधर 1, so ये 1 1 1 0 क्यों आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है सर. हाँ हाँ, एक मिनट चेक करना पड़ेगा इसको दोबारा वापस. ओके, लेट मी चेक. ओके सर हाँ. Q' तो 1 होगा, वो 1 अब और एक बार आप स्टेबल करिए तो हो जाएगा. हाँ, I mean this Q dash is going 0. Suppose 0 is going here. Okay, नहीं सर, this 0, so this is 0 here. ये 0 आया तो ये 1 हो गया. Okay, so 0 1 going 0, this become 1. Okay, now this 1 is going here. Okay, so 1 और यहाँ से क्या आ रहा है? 1 1 0. So 1 0 0, ये 1 हो गया. Okay, now again this 1 go here. Okay, again this 1 go here 1 and this 1 1, this becomes 0. Okay, toggle again. So this becomes toggle. So when you give सर हाँ 1 वाले में सर सर, ये 1 जब 1 GB इधर तो जा रहा है जाएगा. सर तो 0 आ रहा है ना. यस सर. सर 1 आ रहा है सर. अरे 1 ये 1 1 है ना. तो सर, ये ये 0 है ना paper सर. में ये जाएगा. हाँ, सर, 1 तो है. 0 है सर. ये 1 हो गया था. यस सर. ये 1 हो गया. अब स्टेबल है ना. देखो ये 1 है, ये 1 जा रहा है, उधर से 1 आ रहा है. ठीक है, इधर से 1 थोड़ी आ रहा है, 0 आ रहा है. सर 0 आ रहा है सर. यहाँ से. क्यों 0? यहाँ से 0 क्यों आएगा? सर क्योंकि जो गया वो 1 1 है 1 और J 1 है. 1 1 जे भी 1 है, इनेबल भी 1. आउटपुट नहीं है हमारा. फिर से हमारे स्टेबल आउटपुट नहीं है सर. Q0 रखा तो फिर से टॉगल. तुम लोग खुद करो, मेरे से आएगा. ऐसा मिस्टेक थोड़ी होगा. तुम लोग खुद करो, एक बार चेक करो. ओके, सो कुछ मिस्टेक और करने में ना. दिस इज आई एम स्टार्टिंग विद 1. ओके, एंड दिस इज Q bar is 0. ओके, so I am now this Q is going here 1. Okay, this Q is going 1 here, this 1 is going here. Okay, I am getting 0 here, 1 0, this becomes 0, this become 1. Okay, now this 1 is going here. Okay, 1 is also going here, 0 is coming. Okay, so 1 0 0 0 1. Okay, 1 1 1 0, this become 1 0 0 1. Okay, 1 1 1 1 1. Okay, 0. ये स्टेबल हो गया क्या? जी सर, अभी तो स्टेबल हो गया ये पूरा. स्टेबल कैसे हो सकता है? ये इनवैलिड हो गया सर. सेकंड Q1 और Q इनवैलिड कैसे हो सकता dash है? भी 1. 1 1 पे 1 थोड़ी आएगा. तो भी हाँ दोनों. 1 1 पे कैसा बनाएगा? सो सर ये इनवैलिड आ रहा है ना. इनवैलिड नहीं होगा. इनवैलिड तो सर्किट एक बार सही है, एक बार देखो फिगर में. सर्किट ठीक है ना. अभी सर्किट में क्या होता है कि ये इनपुट आपके जाएगा इधर. Okay, this is going here. Okay, and this is going and this is going there. Okay, so this one going here 1 1. Okay, if I 0, if I start from 0 here. Okay, suppose this is 0. Mistake करवा रहे हैं मुझे. Okay, this is 0 in the beginning. It is 0, so this is 0. Okay, and this 0 is going here 0, so this becomes 0, this become 1 1 0 0, this is 1. Okay,
Now this 1 is going here. Okay, 1. So 1 1. This will give me 0. Okay. So this 1 0 0. This give me 1. Now it's now we change again 1. Okay. Now this 1 is going here. Okay, and this same 1 is going here. Okay, 1 1. This becomes 0. Now 0 0. This becomes this. Let me check this one. Okay, some mistake is there. Is 1 1 पे क्या है आपका toggle होना चाहिए. So I will discuss. I will check it and tell you tomorrow. Okay, some mistake is there. So I हाँ बोलिए. So I think है ना उसमें ऊपर से होते हैं ना ब्रांचेस इससे मतलब ऊपर से ब्रांचेस होते थे ना जेके में मतलब नहीं ये होता है. I have drawn the circuit, maybe wrong. I'll check it tomorrow. Okay, I'll tell you tomorrow this one. Yes, sir. Don't waste time on this one cheese page. So now let me draw the truth table for JK flip flop. Okay, so we have J, we have K. Okay, we have Qn, we have Qn plus 1. Okay, and then we have clock. Okay, so when clock is there, so when JK, when it is 0 0, okay, Q is 0, you get same no change condition state. Okay. When you have clock on, this clock on. Okay, when input is 0 0, you have 1 here, you get 1 here, that is your no change condition NC. Okay, similarly when clock is on, you have 0 1 input, 0 1 input. It can be 0, it can be 1. So 0 1 may you get reset condition, so you get here 0 0, you get reset condition. Similarly, if you have 1 0 and 1 0, 1 0 1 0, what you get? You will get here 1 1. Okay, always 1. Sorry, you have 0, you get 1 here, you have 1, you get 1 here. That will be your set condition. And then if you have again 1 1, so if this is 0, this will become 1. If this is the 1, this becomes 0. Okay, so this is your become toggle condition T. Okay, toggle. Similarly, if the clock is 0, then input become ineffective. Okay, so you get no change condition. This is the truth table for JK flip flop. थर्ड एंट्री है ना वहाँ 0 1 आएगा क्या? कहाँ पे? इसमें जो फर्स्ट लिखा है 1 2 थर्ड ना? नहीं वैसे रो वाइज थर्ड मतलब 1 2 3 this one. इसमें 0 1 आएगा. 0 1 है. हाँ यही. You get always reset condition ना. 0 तभी 0 आता है, 1 तभी भी 0 आता है. Okay. Reset conditions. तो ये आपको मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया है, you can put these entries. एक बार चेक कर सारी एंट्रीज करके चेक कर देना. Okay, and let it check these entries are correct or not correct. The entries तो correct है, सर्किट में उसका प्रॉब्लम हो. You try all the टॉगल. हाँ. टॉगल से हमें फायदा क्या हुआ? हमारे पास आउटपुट तो फिर भी नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है लेकिन हर बार चेंज हो जा रहा है. हाँ तो उससे थोड़ी मतलब है कि क्या आ रहा है, कुछ स्टोर तो हो रहा है ना. लेकिन हमने मतलब एसआर से हम जेके की तरफ इसलिए बढ़े थे ना क्योंकि एसआर पे में 1 1 पे इनवैलिड मिल रहा था. हाँ तो वहाँ पे वो तो हमारे पास वो तो इनवैलिड था ना. यहाँ पे तो यहाँ पे इनवैलिड थोड़ी ना, यहाँ पे स्टेट्स है ना. भाई हमको क्या करना है, स्टेट इनपुट ऐसा चाहिए जो स्टेट को चेंज करे. अच्छा, तो स्टेट चेंज तो हो रही है ना यहाँ पे. ओके, सो दिस इज योर यहाँ पे जो नो चेंज कंडीशन होगा वो मेमोरी कंडीशन है ना. वहाँ पे मेमोरी हो रहा है. कहाँ पे नो चेंज कंडीशन जहाँ पे होगा एक्चुअली. हाँ मतलब वो इनपुट उसकी कंडीशन को चेंज नहीं कर रहा. बस आप कंडीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हो. 1 से 0 0 से 1 चेंज नहीं कर पा रहे हो, फ्लिप फ्लॉप नहीं कर पा रहे हो. नो चेंज कंडीशन है. नाउ दिस वाज योर जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, नाउ डी फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया था? डी फ्लिप फ्लॉप में क्या किया था हमने? सर टी एक लिया था, उसको इन्वर्ट कर दिया था. Similarly, what is T flip flop? Okay, now we'll see what is T flip flop. So in the case of T flip flop, we have JK flip flop.
इसको अगर हम कॉमन कर दें, J और K दोनों को कॉमन कर दें, then that will become your T flip flop. Okay, so this is your JK flip flop. This is a Q, this is a Q bar. Okay, अगर दोनों को मैं T से कनेक्ट कर दूं, T से, okay, T वेरिएबल से, then this will become your T flip flop. Okay, and इसका सिग्नल क्या हो जाएगा? T Q Q bar. Obviously there will be clock तो रहेगा ही. Okay, so common input दे दिया, then it will become your T flip flop. Now T flip flop का टेबल ड्रॉ कर दो एक बार, टू टेबल ड्रॉ कर दो. T flip flop का टेबल कैसा आएगा? ओके, टी वेरिएबल मतलब क्या? टॉगल होगा या फिर नो चेंज कंडीशन होगा? इनपुट सेम है, तो या तो आप क्या 0 0 दे पाओगे, या फिर 1 1 दे पाओगे. क्या 1 1 देगा? 0 1 0 नहीं दे पाओगे. ओके, so if I draw the truth table for this one, so you have clock, you have T, अब एंट्री में T रहेगा, you have Qn and you have Qn plus 1. Okay, so this is my clock enable. Okay, so you can give 0 0 मतलब J0 K0, that is if it is 0 it will become 0 0 0 में क्या था? no change condition. If it is 1 this become 1, no change condition state. Okay, now if you apply 1 1, okay, you apply 1 1 and it is 0, so the 0 become 1. Okay, if you apply 1 1, here is 1, this becomes 0. Okay, that means what? Toggle condition. Okay. And the next condition is what? All toggle condition hogi nahi. Now you can make it 0, clock 0, so this become ineffective. Okay, so if it is 0 it become 1, it become 1. Okay, no change condition. This is your truth table for your this one. सर हाँ. टॉगल मींस क्या होता है सर? टॉगल टॉगल का मींस मतलब हो गया, अगर 0 है तो 1 बन जाएगा, 1 है तो 0 बन जाएगा. रीसेट में क्या होता है? 0 है तब भी 0, 1 है तब भी 0. सेट में क्या होता है? 0 है तब भी 1, 1 है तब भी 1. टॉगल में 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा बस. ओके सर, ओके सर. Okay, now this is your truth table. Now put the heading characteristics equation for flip flop. Characteristics equations for flip flop. हाँ, any question? तो ये वाला टी फ्लिप फ्लॉप था ना? This was T flip flop. तो कर लो तो बता देना. Now we are going for characteristic equations. Okay, so now first start with JK flip flop, और JK flip flop के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे. So I'm erasing this one. अब फटाफट से JK flip flop का टेबल लिख दो फटाफट. JK flip flop में टेबल कैसा होता है? So JK flip flop में you have clock, अभी खाली JK लिखो. J clock तो अंडरस्टूड है, इनेबल है. JK you have Qn, you have Qn plus 1. Okay, so I am to write the equation for Qn plus 1. So Qn plus equation लिखना मतलब क्या हो जाएगा आपका? 0 0 0 0 no condition, so 0 0 0, this is 1, this become 1. Okay, then you have what? 0 1 0 0 1 0, you have 1. Okay, then it's you 0. Okay, next is your 1 0, and 1 0 पे क्या होगा? If it is 0 this become 1,
if is 1 0, this is 1, this become 1. Okay, इसके अलावा और क्या कंडीशन है जेके फ्लिप फ्लॉप में? इसके अलावा हो गया ना ये 0 0 0 0 1 1 1. कंडीशन लिखनी है ना? हाँ हाँ, ये 1 1 1 1 वाली. अब नेक्स्ट है 1 1 वाली. सो 1, ओके, और नीचे. ओके, दिस इज योर 1 0 1 1. ओके, नाउ 1 1 1 1 1 1 1 1 पे क्या आएगा? टॉगल. 0 1 टॉगल हो जाएगा. Toggle. If it is 0, this become 1. 1. If it is 1, this becomes 0. Okay. Now you have the truth table for q n plus 1. You can write the equations. Okay. So now solve the K map. Okay. You have 8 cells. Okay. You have J and you have K, Q, N. Okay. So this is your output. So you can write 0, you can write 1 here, you can write 0 0 0 1 1 1 1 0 0 पे 0 1 पे 1. Okay, then you have 0 0 0 1 2 3 4 5 4 पे 1 5 पे 1. Then you have 6 पे 1, 6 is here. Okay, so 6 पे 1 and then you have 0 here. चेक करो सही है कि नहीं है? सर ये मतलब नंबर में कन्वर्ट किया क्या भाई जहाँ पे 1 है वहाँ ये अपना एसओपी फॉर्म है ना, मिन टर्म्स है ना. ये 0 की पोजीशन 1 2 1 2 3 0 1 3. करेक्ट है सर. ठीक है ना. ना अब यू कैन सॉल्व द के मैप और बताइए क्या इक्वेशन आ रही है? Now if you solve the equation, okay, क्या कर सकते हो? You can take this one, okay, and you can take this one. So qn plus 1 का क्या हो जाएगा? You got k bar qn plus सर J QN बार प्लस K बार j qn bar. ठीक है, ये आ रहा है इक्वेशन? यस सर. So this is your, ये क्या है? नेक्स्ट आउटपुट की इक्वेशन. ओके, दिस फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप. नाउ सिमिलरली यू कैन ड्रॉ फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप आल्सो. एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या चेंज आएगा? सर हाँ, सर ये इक्वेशन एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? क्या? ये मतलब ये आ नहीं रहा, मतलब के क्यू एन. भाई ये क्या आपका? दोनों ये one. इस पेयर के लिए क्या कांस्टेंट है? 0 1 कांस्टेंट है. यस सर. 0 क्या है? के बार है. 1 क्या है? क्यूएन है. और तो yes, के sir. बार क्यूएन. Yes, sir. इस पेयर के लिए क्या कांस्टेंट है? एक तो जे कांस्टेंट है, J1 है. यस सर. और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है. 0 0 तो क्यूएन बार, तो क्यूएन बार आ गया. ओके सर. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. नाउ इसी को बनाओ एसआर फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन लिखो. एसआर. ओके, सो एसआर में क्या चेंज आएगा? 1 1 कंडीशन है. 1 1 कंडीशन पे क्या होगा? इनवैलिड, डोंट केयर कंडीशन ना. 1 1 पे क्या आएगा? डोंट केयर कंडीशन. Yes, sir. ओके, सॉल्व करो अभी. Now, if you solve this for SR flip flop, okay, so for SR flip flop, what will it become? Okay, you have again 4 cells. Okay, ये SR हो गया, ये R हो गया, ये QN हो गया. Okay, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 0 है, 0 है, 0 1 2 3 4 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, and then you have this one. Okay, now write the equation for qn plus 1. क्या आएगा बताओ? कैसे बनेगा इक्वेशन? 0 1 आएगा ना s के नीचे. हाँ, 0 1. ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? S plus R bar QN.
ओके, तो ये तो पूरा एस हो जाएगा एस, और ये क्या हो जाएगा आर एस बार आर बार क्यू एन। क्यू। ये कैरेक्टर क्वेश्चन है। ओके, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, you have only one variable d here, okay, so d में क्या होता है, SR की जगह क्या हो जाएगा 0 1, you can have a 0 SR, हम -1 करने को बोल 0 1, okay, चलो 0 1 में 0 आएगा तो 0 रहेगा, 0 1 में अगर 1 है तो 1 रहे, 0 1 में क्या था 0 आएगा, 0 1 0 1 क्या होती है रीसेट कंडीशन, ओके, तो d0 d बार, SR में क्या होता है s is your d और r is your d बार, ओके, तो 0 तो ये r1 है, 0 1 में क्या आएगा रीसेट कंडीशन, 0 1 में क्या है रीसेट कंडीशन, देन यू हैव 1 0 1 0 1 0 you have set condition 1 0, okay, you have a set condition, if it is 0, if it is 1 then also it is 1, okay, अब ये हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप, ओके, डी फ्लिप फ्लॉप। राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। सर ये हम RQN+1 लिख रहे हैं कि RQN लिखना है, जो हमने पीछे जो भी अभी आपने रब करा, हाँ ऊपर RQN लिखा था ना, मैं लिखा था एंड S एस था और आर क्यू एन था ना, क्यू एन। यस सर, और सर जो हम एंट्री कर रहे हैं वो हम RQN, हाँ वो एंट्री कर रहे हैं, आउटपुट निकाल रहा है क्यू एन प्लस वन निकाल रहा है, क्यू एन प्लस वन की ये तो इसी का फंक्शन लिखना है ना, जिसका फंक्शन होता है उसी का टेबल लेंगे ना, ये तो इनपुट्स है, ये आपका आउटपुट है। यस सर, यस सर। ओके, नाउ डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, 4 ही है आपके पास में, इसका तो डी होगा सर, तो ये आपका डी फ्लिप में क्या है, डी आएगा, एक क्यू एन है 0 1 0 1, तो ये 0 0 है, ये 1 1 है, ओके, तो क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, ये आएगा बस डी हो जाएगा, ओके। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर नाउ टी फ्लिप फ्लॉप, अभी टी फ्लिप फ्लॉप की टेबल तो बनाई थी हमने, यू कैन राइट फॉर टी फ्लिप फ्लॉप आल्सो। टी में क्या होता है 0 0 एंड 1, हाँ बनाओ, टी का बनाओ, नाउ राइट फॉर टी फ्लिप फ्लॉप, टी में क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ओके, सो टी में क्या होता है जे आल्सो टी, के आल्सो टी, ओके, सो यू कैन ओनली अप्लाई व्हाट, यू कैन अप्लाई only 0, when you apply 0 j0 k0, if it is 0 you get 0 here, if you have 1 there is no change condition, you get 1 here, okay, j equal to 1 t equal to 1 toggle condition, if it is 0 you get 1 here, if it is 1 1 if it is 1 here you get 0 here, okay. So now you solve for this one, okay, you solve for t, okay, so qn plus T XOR QN आ रहा है, t qn, okay, so 0 1 T XOR QN, 1 0 0 1 0 1, okay, so qn plus 1 will come, क्या आएगा आपका qn, तो ये सॉल्व तो होगा नहीं, ओके, सो दिस यू गेट qn t bar, ओके, एंड फॉर दिस वन यू गेट qn bar t, कौन सा गेट है ये, सर XOR के, XOR गेट है, ओके, सो दीज वर योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। और आज का जो होमवर्क है वो एक तो आपको चेक करना है, जो आज हमने जेके फ्लिप फ्लॉप किया उसके सारे वैल्यू पुट करके देखो उस गेट में, और देखो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, हमारा काम इससे होता है, ओके, टुमारो आई विल चेक इट अगेन एंड विल डू सम प्रॉब्लम्स टुमारो। Thank you. Any question?
नो सर। स्टॉपिंग हियर। ओके सर हाँ सर मेमोरी सर कैसे स्टोर हो रहा है? भाई आउटपुट तो एक ही है ना, 0 या 1 है, वो एक बिट तो स्टोर कर ही रहा है ना अपने आउटपुट में। अभी काउंटर करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, काउंटर करेंगे तो समझ में आएगा। ओके सर।